Good morning to all of you. Today we continue with the array programming. So we will learn how the array works, how to store the array elements, and how they will be fetched out and how it gets executed. This all things we will discuss today. We will be writing the programs of the array questions. Before writing a program, few things you must remember. Now, what should be the structure? What should be the structure of writing an array program? Now, if suppose the size is specified, then we don't need to ask for the size. But if suppose the question says n terms, n size, it says an array of n size, then you have to take a size also. The first thing in array is that you should be very clear whether the size is specified. If the size is specified, then array will be declared directly. If the size is not specified and it is said as n size, then you must input the array size. So first array size declaration should be there. Then the second stage is you must declare an array of this type, whatever the type of value you are going to store, of the type of size n or the specified type. Alright, the second is the array creation. Now the third one is the array must be filled with the elements, because when you declare an array, when you create an array, the array is empty. There is no element present there. To fill up those elements, you must first fill up the elements in the array, and when the elements get filled up, then the logic portion comes. Then you have to implement the logic on the array elements. Remember now, on the array elements logic has to be implemented. So question arises, how can I get those elements? For those elements, I must be able to access their index values. If I am able to refer to their index numbers, then automatically I will fetch that through the index number we can fetch the array elements. So you should work with the index value. And after the logic implementation, if required to display only a value, then the variable is to be printed. And if it is been asked in a question to print the original array and print the new modified array or print the array, then you have to run a loop. After running a loop, only you can display the array. So let's proceed how it has to be done. Remember, 5 points for an array. First size declaration, then array declaration, then element entry. The fourth one is logic portion, and then fifth one is display portion. So we are going to follow these 5 rules for writing the array programs. So we move on with the array programs. Now for this, what I had said, you have to remember: first size declaration, then to array creation or declaration, element entry, logic, then display. Logic means formula or the process on which you are going to get those values, and display. If we need to print array and array as output, then we need to run
loop. Then we need to run a loop. Let's move on to the first question. Web to input an array of size n. Now this n array is an integer array. And find the sum of its element. Find the sum of its element. So we start with import java.util.string class sum void main, run a scanner, run a scanner there. Alright, now the first thing is size declaration, because the array size is n, so you need a loop to access the elements. You need an n for the size, and you need to find the sum. So s equals to 0. System.out.println, enter the size n equals to sc dot next int method. Alright, so you have declared the size, you have asked the size from the user. Then what is the second point? Array declaration. I am going to declare an array. Now array is what? Integer type. So int a array, the name of the array is a, and the array symbol equals to new int, and the size is n. The size is n. Now what has happened in your program till now? Till now you have asked the user to input a size, and n, suppose he has given a size n as a 5. Then an array has been created. 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट के लिए array create हो गई है. एंड द नेम ऑफ द array is a array, और उसके इंडेक्स हो गए 0 1 2 3 4. So till now the array is an empty. So in an empty array, what you can do? We cannot find the sum of the elements. So therefore they must be filled up with the elements. The elements must be present. Then only we can add it out. Is it or not? So to fill up the element, we need to follow our third step. What is the third step? Element entry. So for element entry, we should be able to access the indexes. If we are able to call the index, then only the element is going to be filled. So to call the index, we must run a loop for I equals to 0, I less than n, not equals to n, because n size is 5. Is it? If you write equals to 5, then there is no space for the fifth element. Is it? There is no space for the fifth index. So it will give a error message. What is an error message? The error message is array index out of bound, null pointer exception. Array index out of bound exception, it will be giving it array index out of bound. Similarly, you cannot write here -1 or -2. You cannot search for the negative indexes, because the negative index is not present there. And always this index should be, the n should be size -1. Remember, this should be always size -1. Alright, the size is 5, 5 minus 1, 4. So I is less than 5, I plus plus. Now system.out.println, enter the elements. Now where you need to enter the elements? A of I equals to sc dot next int method. जैसे एक वेरिएबल में इनपुट कराते थे तो वहां पे एक वेरिएबल में इनपुट होता था, लेकिन अब यहाँ पे एरे के एलिमेंट में इनपुट कराना, इसीलिए तुमने क्या बताया, एरे के
इंडेक्स में, तो एरे का इंडेक्स में वो इनपुट करेगा। जैसे आई की वैल्यू अभी 0 है तो ए ऑफ 0 में इनपुट करेगा, यानी कि पहला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो यानी कि सेकेंड एलिमेंट की एंट्री हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ए ऑफ 2 एरे का सेकेंड पोजीशन में वहाँ एलिमेंट एंट्री हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 होगी तो ए ऑफ 3 यानी कि थर्ड पोजीशन में इनपुट हो जाएगी। फिर ए ऑफ 4 तो लास्ट एलिमेंट इनपुट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से समझो, जैसे कि यहाँ हो चुका आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन n, 0 लेस देन 5 ट्रू हो गया तो मैसेज आएगा एंटर द एलिमेंट। यहाँ मैसेज क्या है, एंटर द एलिमेंट्स। कहाँ एंटर किया आपने, ए ऑफ 0 में। मान लो मैंने 5 एंटर किया, यहाँ पे 5 आके स्टोर हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 5 हो गया। नाउ एंटर द एलिमेंट्स, वंस अगेन यू गेट अ मैसेज एंटर द elements a of 1. Whatever I will feed in, it gets stored into a of 1. Suppose I feed in 2, so 2 gets stored in a of 2. Likewise the loop continues. Now after this element, suppose an element entries over 5, 2, 3, 7, 9. Suppose I had inputted these elements. Now what I need to do according to my program, find the sum of the elements. अब एक एक एलिमेंट्स निकालेंगे तभी तो ऐड होगा, तो फिर से उसके लिए क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई, एरे के उस इंडेक्स के एलिमेंट को सम में ऐड करिए। ठीक है, इज इट क्लियर? नो, नहीं समझ में आई बात तो फिर यहां देखो, आई की वैल्यू हो गई कितनी, 0, 0 लेस देन 5 ट्रू। एस कितना है, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई, तो एस की जगह 0, ए ऑफ आई क्या है, ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 में कौन सा एलिमेंट है, ए ऑफ 0 में 5 है, तो 0 प्लस 5 तो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, तो s इक्वल्स टू 5 प्लस ए ऑफ 1। ठीक है, 5 प्लस ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 कितना है देखो यहाँ पर 2 है, तो ए ऑफ 1 की जगह 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन 5 ट्रू, सम इक्वल्स टू 7 प्लस ए ऑफ 3। नो 7, ए ऑफ 3 कितना है, ए ऑफ 3 अरे सॉरी, यहाँ पे आई 2 होगा ना, उनके बाद 2 आएगा ना, 3 लिख दिया मैंने। ए ऑफ 2, 2 लेस देन 5, तो ए ऑफ 2, 7 प्लस ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 में क्या है, 3 है, ए ऑफ 2 में यहाँ पे 3 है, तो 7 प्लस 2 तो 9। इसी तरीके से प्रोग्राम चलेगा तुम्हारा, इसी तरीके से आगे प्रोग्राम बढ़ेगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद फिफ्थ में डिस्प्ले करना है। क्या डिस्प्ले करना, सम डिस्प्ले करना, तुमको एरे नहीं डिस्प्ले करना, तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू रन अ लूप, वी विल सिंपली प्रिंट द वैल्यू which gets stored into the sum. So we are going to print it in a normal way. System dot out dot println sum of each element is plus s. Close. This is how you have to write your array program. This is how you have to write your array program. Now one more question we will go with, that sum of or count the number of even and odd elements present in an array. ठीक है, so question 2, web to input an integer सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक है ना, अभी यहाँ पे सिंगल डायमेंशन पढ़ रहा है तो हमेशा समझ में आना चाहिए कि सिंगल डायमेंशनल एरे of size n and count the number of even and odd elements present in it.
we need to count the number of even and odd elements present in it. So import java.util.asterisk class count void main. So here we go with the scanner. Sc equals to new scanner system dot in. What you will need I loop you require n for the size. You need a counter c1 and c2. So c1 equals to 0, c2 equals to 0. Now, system dot out dot println, enter the size. The first step is to declare a size. So n equals to sc dot next int method. Size declaration, then array declaration. And type is already specified to you. It is an integer single dimensional array. So int array equals to new int n. Array declaration is over. तो अभी तक एरे बन गया, एरे के बक्से बन गए उतने साइज के. अब उसमें एलिमेंट एंट्री चाहिए. तो एलिमेंट एंट्री के लिए फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. सो प्लन एंटर द एलिमेंट्स. enter the elements. A of I equals to sc dot next int method. एलिमेंट एंट्री हो गई यहाँ पे. इसके बाद क्या करना है, एलिमेंट एंट्री हो गई तो सारे एलिमेंट में चेक करना है इवन है या ऑड है, काउंट करना है. तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. अब लॉजिक लगाने के लिए लूप चलाया. इफ a of I mod 2 इक्वल्स टू 0 तो c1 प्लस प्लस. अगर इवन है तो काउंट कर लिया, एल्स क्या होगा, ऑड होगा. लूप बंद, प्रिंट कर दिया. सिस्टम डॉट नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स प्लस c1, नंबर ऑफ odd elements plus c2. क्लोज. एक और कर लेते हैं. We have to input an array of size n, integer array size n है, and find the sum of even elements and product of odd elements. So you go with it. Import java.util.asterisk class calculate void main scanner sc equals to new scanner system dot in. Now what you require, a loop, a size, and then we need a sum, we need a product. Sum is assigned to 0, product is assigned to 1. Now suplan enter the size. So n equals to sc dot next int method. Now declare an array. int array equals to new int n. The array being declared here. Now element entry. For I equals to 0, I less than n, I plus plus. So plan enter the elements. Enter the elements. A of I equals to sc dot next int method.
एलिमेंट एंट्री हो गई. And now you need to implement a logic. फिर logically for I equals to 0, I less than n, I plus plus, if a of I, क्योंकि एरे का वो एलिमेंट अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे, एरे एलिमेंट को ऐड कर लेंगे. नहीं तो क्या करेंगे, एरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई हो गया. सम ऑफ इवन एलिमेंट्स प्लस एस सम ऑफ odd elements, sorry, sum not, it's a product of odd elements plus p, main close, class close. This is how you have to write your program, and you have to learn it. Practice it out without seeing, write it again. Thank you.